talking about content now, जैसे हम बात भी कर रहे हैं, आपने भी कहा कि of course as an actor who's really passionate about their craft, they do at times feel restrained by the kind of scripts and the choices that they have at their hands. What do you watch when you, like, you know, for leisure or for otherwise for research? What do you like to watch? आप क्या देखती हैं और आपके कंटेंट की आपकी जो कंटेंट के ऊपर नजर है वो किस तरह के कंटेंट के ऊपर आपकी ज्यादा एक नजर है, ऑब्जर्वेशन है? दो तरह की है. एक तो है, I mean, I could easily say social issue because it's the right thing to say, and I do agree. I think social issues are very important, and उनको जो actually real social issues हैं हमारी ज़िंदगी में उनको सामने लाना चाहिए. But more than the script or the story itself, it's how the director is going to implement it. That makes so much difference. You know, मुझे अभी for example हाल ही में सबा कमर का एक ड्रामा आया था सरेरा. I love that concept. I thought it was such a fantastic concept. You know, she's kind of the narrator. Lekin instead of like having a voiceover or being connected to everybody's life, she's just a carrier of those passengers. And I thought that was absolutely beautiful. हर एक passenger की अपनी ज़िंदगी है, अपना issue है ज़िंदगी में, right? And I love stuff like that. Something that's actually creative. और आप जब देखो आपको कि यार ये मज़े का है. एक तो वो हो गया कि social issues भी हैं, but then the way it's been portrayed. You don't have to always make everything so dark. You know, you can actually talk about like real dark, serious, taboo issues. And you can tell people कि ऐसे भी होता है instead of being like, oh my god, डरो इससे ऐसे भी होता है kind of a thing. You know, we should prepare and we should kind of enlighten our people कि हिम्मत रखो इन चीज़ों से लड़ने की, खुदा न खासा कभी अगर आपके सामने आती हैं तो. The other kind, I love stories. I love love stories. I swear. I think we need to make more love stories, happy ones, intense ones. You know, even star-crossed lovers because I feel like प्यार के बगैर कुछ नहीं होता. In all honesty, प्यार में बगैर कुछ नहीं होता. अच्छा. And I think scripts need to have that. I mean, अगर मैं थकी टूटी आई हूँ घर काम से, right? And I've had my 20 hours of shift, and I've come back home, and I turn the TV on, and something, you know, similar than every other story I've watched or I'm doing is coming on, I probably will just change the channel, right? But if it's something cute and it's, you know, loving or it's like it has like romance in it, I'll be like, oh, आगे क्या होता है? Let's see. You know, so it's nice to see that. Do you watch Pakistani dramas? Rarely. But I do. कौन सा आखिरी देखा आपने आपको अच्छा? सर आपने सरे राह का तो बताया हमें, सबा का. हाँ जी. बट और कोई जो आपने देखा आपको बड़ा पसंद है? मुझे तेरे बिन बहुत अच्छा लगा. हो जाए तेरे बिन के ऊपर आज मेरा और आपका एक रिव्यू ही हो जाए. Let's do it. बट ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात इसलिए बताई कि Kubra, there's a real obsession for Pakistani dramas and Pakistani actors, है ना? And you yourself, mashallah, experienced. Alhamdulillah, yeah. What do you think makes our drama so popular, yaar? I think it's the reality of the expression. It's the reality of the expression. यार ये, I think that's very important. Like हम overreact इतना नहीं. जो ड्रामे अच्छा करते हैं काम, mostly people like them because people relate to them in some way or the other, right? We don't have to always overreact to everything. And also जो बात हो रही है उसको इतना grand करने की ज़रूरत नहीं, इतना you know पहाड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है उसको. We can speak about very big subjects in a very subtle manner, and I think that's when the relatability comes, and I think that's why people like our dramas as well. I think of course also because our dramas are more focused on relationships, right? Exactly. मियाँ बीवी का relationship, सास बहू का relationship, माँ बेटे का. And because हमारी सोसाइटी में in particular, because लोगों की जिंदगियों में भी जो उनके रिश्ते हैं वो सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं. I think that's what works. But मैंने कुबरा अपने लाहौर स्पेशल में एक चीज सीखी है, because हमारे सेट के ऊपर हमारे जो मूवी स्टार्स हैं 90s के, शान, रेशम, रैम्बो साहब, ये सारे आए. और मैं जब उनसे डिस्कशन हो रही थी, उनका एक कंप्लेंट था कि हमारे जो बहुत सारे ड्रामा एक्टर्स हैं, क्योंकि वो फिल्म एक्टर्स भी हैं, ये जो आप एक्सप्रेशन की बात करी हो टेलीविजन में तो चल जाता है, बट the medium, the bigger screen requires a bit of like, you know, oomph and a bit of exaggeration. Right. You also do films. Yes. So do you struggle with that when you're doing a film? और ऐसे क्योंकि हमारे बहुत सुनते हैं ना कि हमारी फिल्म भी ड्रामे की तरह लगती है, तो do you believe कि ड्रामे की एक्टिंग और फिल्म की एक्टिंग में फर्क है या एक्टिंग होती है? I think फिल्म के लिए आपको exaggerate करना पड़ता है थोड़ा सा, because आप इतनी बड़ी स्क्रीन पे जब होते तो आपका एक हल्का सा, अगर आपने गलत टाइम पे ब्लिंक भी कर लिया है ना, तो that has a meaning also, right? You can't even blink at a wrong time kind of a thing. एक मसल आपको एक exaggerate होकर इंसान को नजर आता है. So I think exaggeration करनी पड़ती है फिल्म के अंदर, लेकिन at the same time, I feel like
It depends from script to script as well. You know, a movie like Jawani Phir Nahi Aani or London Nahi Jaunga or Punjab Nahi Jaunga, which are, you know, comedy movies as well as, you know, romantic movies, उसके अंदर आपको emote करना ज़रूरी होता है, or even Maula Jat for that matter. I think everything is so much grander. But then we have scripts like Cake. We have scripts like Motorcycle Girl, right? Yeah. Which are again very subtle if you think about it. And those movies have also done fantastic. Yeah. Like Cake is one of my favorite movies to watch, you know, because it's so... you relate to it a lot, and the way everything has been tied together, from the relations to the expressions to the sisterhood, everything you can relate to it. And sure, it could be like it could classify as like a cinema drama, but at the end of the day, it's storytelling. True. You know, so True. I do think कि ड्रामे में और फिल्म में ये फर्क है कि हर चीज on a grand scale होती है. आप इंस्पिरेशन किससे ड्रॉ करती हैं? किसी का काम देख के, दूसरे एक्टर से, कोई मतलब इंटरनेशनल कंटेंट देख के, where do you get that inspiration and maybe perhaps encouragement कि यार कि okay, I want to excel as an actor? So I think a lot of the times, obviously I've grown up watching Hollywood, I've grown up watching KE dramas, Bollywood as well for that matter. तो वहाँ पे आपको inspiration आती है. You know, like I think, you know, Meryl Streep is phenomenal at what she does. You know, Jennifer Lawrence, I love her to bits. I love Tom Hanks. Tom Hanks, yeah, Tom Hardy can like it. You could love Tom Hardy as well. Sure. I mean, I do. Tom Cruise as well. I do. Or Tom Holland also for that matter. Oh, he's a cutie. He's a cutie, yeah. But Tom Hanks is my, like, again, the reason I love him, कि वो इतनी minimal चीज में इतनी बड़ी चीज बोल रहा है. बिल्कुल ऐसे ही. You know, I love that about him. और वो जो subtle acting की आप बात कर रही हैं for the big screen. Yes, exactly. That's exactly what I'm saying. So I take inspiration from these people with something I've learned recently actually, कि मैं जब अपना ड्रामा देखती हूँ या अपना सीन वापस देखती हूँ, और बहुत कम होता है ऐसे, लेकिन I've recently made it a point to watch it back. वो इसलिए क्योंकि जो इमोशन मुझे स्क्रिप्ट में फील हुआ, क्या देखते हुए मुझे वो इमोशन फील हो रहा है या नहीं. I think आपको अपना काम देख के भी बहुत लर्निंग होती है कि Are you a tough critic? Oh, on myself? Oh yeah, बहुत बुरी. Like मुझसे पूछो तो आज तक मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है, in all honesty. Like seriously. लेकिन I have to be, I feel like. अगर मैं जिस दिन मैं डिसाइड कर लूँगी ना कि ये सीन मैंने बेस्ट किया है, इससे बेहतर हो नहीं सकता, तो I think वो मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ to learn. You know, और मुझे सीखने का बहुत है कि like I want to keep learning, never stop learning. As a critic of your own work, what's your worst performance? Alif Al Insan. Really? Yeah. I hated my character. मुझे अपने character बहुत बुरा लगा था उसके अंदर. और I'm sure और भी होंगे. Oh, can I say this? Of course. Sangema. Really? Yeah. ओए. मैंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया था उसमें, मुझे लगता है. आई थिंक मैं बहुत अच्छा कर सकती थी. मुझे लगता है वो किरदार भी सही नहीं लिखा हुआ. तो मुझे जेन्युइनली फील होता है कि संगे माँ में. It's big of you to take responsibility for it, but I thought the character had a few lapses.